Hi, very good evening to all of our customers who joined today. So we'll be starting this webinar in about a minute. Mr. Pratik Agarwal is just joining us. So just start in a minute. Hi, sorry. Hi. Uh, so welcome to all our customers as a part of this regular interaction with our series. So we are happy to have Mr. Pratik Agarwal, our MD and CEO of Motilal Oswal AMC. I think today is an excellent day for all of us to ask questions about all the anxieties we have. And sir, up to you. I think there's a lot of questions already started coming in. So it's going to be an interesting session. So make the most of it. Ask a lot of questions. I'm sure you'll be getting to know us better by the end of this session. And without any further ado, I'll hand over to Mr. Agarwal on this session. You can start, sir. यार I thought ये दो जगह से कैसे आ गया? Hello, can you hear me? We can hear you, sir. We can start. But there are two of me there. Anyway, sorry guys about this. Good evening. Rainy day in Mumbai. Thank you for coming in. Let me upload a short presentation that I made for this. We'll try and keep it provocative so that we have a lot of questions at the end. अरे यार yeah 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 so guys, this is the agenda. We will talk of the current biggest thing on the mind, which is US trade issues, the impact that it will have. We will talk on the results. The season is just about ended. We talk on FPIs just to understand why we think the selling pressure that we have seen over the past period will reduce. Time for alpha. And then we have two or three thought-provoking things, which is high beta constructs versus low beta constructs. The desire for consistent performance, does it serve your purpose or not? Long portfolios, whether it helps overall outcomes for the investors or not. And this huge thought in the market that size provides safety. We will share some thoughts on that, and yes, valuations and what we do. Okay. So one on the US thing. Let us assume that the 50% duty stays. Our belief is, though, that it shall not stay. So if we look at the spectrum of deals that have been announced, well, UK is the closest friend of US. They have got 10%. Japan comes in next. They seem to have gotten 15% with some commitment for investments. And it seems they are renegotiating the commitment for investments. Now, if you look at these two economies, Japan is just about the size of India, maybe a notch lower. UK is two notches further down. So, we should hope to get somewhere in the range of 10 to 15% ultimately, because one, we are already the size of Japan and more, and two, whatever the US is thinking of exporting to India, to the world, which is defense, food, energy, for many of these, we may be the largest market and a strongly growing one. So while other economies are, think of it similar or better than the US in terms of affluence and growth, we are way below on affluence. We are poor actually.
but way higher on growth. So, obviously you can't do a deal today where we give away so much of our future that it becomes a net negative. So we think we should have a better outcome versus a Japan or a UK. So Japan, it can be better if you get somewhere in between 10 and 15% without investment commitments. Any which ways we don't have money. So that is our base case. But suppose it stays. Now, happily, what has happened is our biggest exports and where Indian companies hope to gain access to the US is smartphones, and there the duty rate is zero. Now, the way it works is if the US importers, so let's say an Apple commits to invest in the US, the duty stays at zero, wherever they source it from. So India stands to, there is no impact on us on electronics, smartphones. Two, our next biggest exporter is pharmaceuticals, which is large presence in the market. Now, we don't know it as yet, but when US and EU had a deal, generics were kept out of it. The whole thought was the patented product should have similar pricing in Europe and US. Generics were kept out of it. Now we are the cheapest manufacturer of generics globally. Point is, if they put a tax here, it is the US consumer who pays. We can't bring down the prices. And two, they can't even look away from us because, like you are aware, pharmaceuticals need approvals. Approvals take a lot of time coming. So यहाँ पे भी कोई impact नहीं होगा. Now steel, aluminium, and copper, the world has one duty rate which is 50%. So Indian copper guys, guys who send cables, guys who send aluminium cables, copper conductors, etc., are ceteris paribus same as guys anywhere else in the world, unless the US starts to manufacture it internally. So maybe the outlook gets impacted a bit, but nothing else more. Now, petroleum products, yes, we export, but the value addition is very low. Machinery and appliances, yes, they get impacted. Diamond, etc., yes, it gets impacted. It's a large export, but not there on the market. There are hardly any diamond company on the market, and there is a way out. So there's a very little value add that India does. We import from somewhere. So we just basically polish and send it back. Uh, Rajkumar, is Hindi English mix good? Only English is good. A lot of requests is coming for Hindi as well, so we can हाँ balance ठीक है. it. तो हिंदी इंग्लिश में हिंदी दोनों में भी कवर कर बात सकते करते हैं. तो डायमंड में क्या है कि अगर आप समझो ब्रुसेल्स में एक फर्म लगाते हो, इट सेंड्स डायमंड्स टू इंडिया फॉर पॉलिशिंग एंड जॉब वर्क एंड गोज बैक टू दी सेम यूरोपियन कंट्री ब्रसेल्स. Then the tax, if at all, job work may be taken as a service, but the tax, if at all, would be on that 500,000 rupee value addition that happens in the country. तो 1 लाख के डायमंड के ऊपर 500 रुपया का इम्पैक्ट आएगा. दैट्स अ पॉसिबिलिटी. So that can happen in any product where the value addition in India is low. Textiles को impact है, but textiles में X of जिसको कहते हैं अनस्टिच्ड टेक्सटाइल्स, जो कि जहां पे वी वर लार्ज एक्सपोर्टर्स टू द यूएस वेयर देयर इज एन इम्पैक्ट. Stitched textiles, we were not very large. So let's see if it comes down, we gain, but otherwise we will have to route it through somewhere else. अब इस पे आते हैं. Shrimps have an impact, but अगर हम देखिए ऐसा सोचिए, दुनिया में 100 यूनिट का प्रोडक्शन होता था, 100 यूनिट की कंजम्पशन होती है. Now, if for us the most profitable market was the US, we lose that. Somebody else will supply. तो हम वहां सप्लाई करेंगे जहां that other party was supplying. So yes, एक क्वार्टर का डिसरप्शन होगा, पर over medium to long term, this is more of a margin impact than anything else. So this is what it is, and happily the impacted areas are barely present in the market. वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमी. तो अगर हम बाजार देखें, 35% बैंक्स, तो अगर आप इम्पैक्ट देखोगे तो नथिंग.
if some of these spaces like textiles which have borrowed heavily from banks, उनको थोड़ा स्ट्रेस हो तो थोड़ा कुछ स्ट्रेस हो सकता है, सेकंड डेसिमल की बातें हैं. ओके, आईटी के लिए तो अच्छा हो गया. आईटी के लिए द आउटलुक हैज इंक्रीज इम्प्रूव्ड कि व्हाट सेज, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अगेंस्ट देम, बट ये पॉजिटिव है क्योंकि यूएस कंपनीज विल बी फीलिंग वेरी पॉजिटिव, वेरी strong because they have been de facto guaranteed the US market. So they feel strong. Obviously, the spend on IT improves, so that is good. So ये अपना 50% हो गया. स्टेपल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटल माइनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर हम पूरा इंडेक्स देखें तो डी फैक्टो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता. तो हमारा इंडेक्स is not touched by whatever the US may have done on us. Very small parts of the economy have been touched, and it stands to reason because total export ही हमारी 80 बिलियन की थी. उसमें वैल्यू एडिशन समझिए 20 बिलियन का था. 20 billion on a 4 trillion economy is a very small part. They can turn the screws more for sure. They can, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट जैसे सर्विसेज है जहां हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट है $200 billion is outside of the president's ambit of touching. So we are as of now quite okay. अच्छा, अब अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक द ड्रॉप इन द मार्केट दैट वी सॉ लास्ट वीक द बिगेस्ट रीजन, लास्ट वीक हैज बीन प्रीटी बैड, तो ये जो रीजन है वो आप नंबर्स में ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा. व्हाट मे हैपन इन नेक्स्ट क्वार्टर नंबर्स इज मोर बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रप्शन देयर इज सम डिफरमेंट, एंड उसकी वजह से एक क्वार्टर की खराबी आएगी. अगर इस रीजन से डिप है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई, तो जिसको कहते हैं बाय ऑन डिप्स, वो अब मैनिफेस्ट होना चाहिए. Now, last quarter numbers have happened. We have kept on saying, this is time for New India, this is time for Alpha. We will revisit it in that section. ये देखिए राइट हैंड साइड पे इंडेक्स है. इंडेक्स में एक कंपनी महिंद्रा, उसका 32% अर्निंग ग्रोथ आया, बट टेक महिंद्रा का भी 34 आया, बट अदरवाइज इफ यू सी इज ऑल 2, 3, 4 नेगेटिव kind of numbers. Overall is 7.5%. On the left is what we have, and we have kept it theme wise. So financialization means we have an MCX 80% increase, Muthoot 70, Bajaj Finance 20. In EMS electronics, we have two companies which did over 40. Renewable में two companies did over 50, and so on. आप बताओ, हमारे पोर्टफोलियो में ये है, हमारे पोर्टफोलियो में प्राय ये नहीं, and hence we believe we are very nicely positioned. Just keep holding the thought कि market follows earnings growth. This is how the last quarter was. It went terrific for us. Outlook for most companies is good. So we feeling pretty positive about the result season and the outlook. So let the uncertainty subside. I think we should come back quite strongly. ओके, एक और थॉट जो है, देयर आर 3-4 ways आई पुट दिस, कि वी हैव बीन सेइंग इट्स नॉट टाइम फॉर वैल्यू, इट्स टाइम फॉर ग्रोथ. तो अगर आप देखोगे तो दिस इज अ वैल्यू इंडेक्स. एक साल में निफ्टी इज डाउन 1, वैल्यू इंडेक्स इज डाउन 10. 6 महीने में index is up 6, value index is up less than 6. 3 months में though it has done better, 1 month again it is done worse. This is as of last month. So we say it is not time for value, it is more and more time for growth. Growth gets, we will talk on the macros as we go forward. This is how it is. देखिए, growth gets supported when interest rates are down and liquidity is good. So Brent, which is the single biggest cause of stress in the country, oil, is now down. सारे threats के बाद, सबके बाद तेल जो है नीचे है, and whatever is going on is basically to sell more oil to India, because people know कि oil की usage कम होती जा रही है. There is a threat कि oil stays in the ground versus it getting exhausted. Now, second is currency
while we have seen a depreciation seems to be stabilizing. इसको भी आप याद रखना. Forex reserves are good. Current account deficit at the beginning of the crisis is very good. We had a positive month, positive quarter. Last data was positive. Our start is good. Macros are good to withstand whatever is happening. And जैसा कि ये सोच है कि if we have seen this kind of fiscal consolidation, then there is some room to spend. और अब आप देख रहे हो कि जीएसटी वगैरह में गवर्नमेंट कट करने की बातें कर रही है. Now, happily, this is a period like 2000 to 2008, which was capex driven rather than consumption driven. So I don't think the GST cut is going to change that. Just have a look at this. Now there is some sense of start of capex cycle by corporate, just like it happened from 2001 to 2004 period. तो अभी capex में legs बाकी हैं, ऐसा हमको लगता है. Now, fiscal support continues. Government continues to spend very strongly. So while this year you saw in the budget fiscal consolidation, the government continues to spend very, very strongly. The government expense has been front-ended. और साथ में आरबीआई एंड बाकी पॉलिसी मेकर्स ने दे हैव डन व्हाटएवर दे कुड. सो इसको मैं कहता हूँ डबल रेट कट हो गया. तो ये हमारा रेट कट है, डबल रेट कट हो चुका है. एंड अगर आप ये गैप देखो तो इंडिया वर्सेस यूएस के जो रेट का डिफरेंस था वो ऑल टाइम लो है, जस्ट अबाउट 1%. नॉट ओनली द रेट बट लिक्विडिटी हैज बीन इन्फ्यूज्ड. अगर आप देखो तो सीआरआर रेशियो जो है वो कट गया है और उसका एक रोड मैप भी है. थर्ड, गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रही है. गवर्नमेंट ने भी जीएसटी कट्स अनाउंस कर दिए, and in some spaces pretty substantial. So while the media is very focused on US, whatever, it has an influence, not too much, but it has an influence. More importantly, वो हमारे फ्यूचर को इम्पैक्ट करता है, प्रेजेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है. What the government has tried to do is to address lot of the issues of the present. अगला जो सेक्शन है हमारा वो है कि टाइप ऑफ एफपीआईज, जस्ट टू मेक सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग विल दी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंटिन्यू. कि एक जो चीज है वो ये कि अब हमारा मार्केट और हमारा पैसा हो गया है. तो ये अगर आप देखें, दिस इज व्हाट ऑल ऑफ यू पुट टुगेदर एंड द अदर कंट्रीमेन हैव पुट इनटू म्यूचुअल फंड. इट्स ओवर $100 billion. While FPIs keep making noise and the media focuses, they have put in nothing. It is minus $4 billion, and as we speak, it could have increased by another $2 billion. So minus $6 billion. Now, lot of the money that comes in the country are actually not equity money. वो equity का पैसा नहीं होता है, वो debt का पैसा होता है. इंडिया में वो लोग स्टॉक खरीदते हैं और फ्यूचर बेचते हैं. तो जो बीच का पैसा है वो लेके जाते हैं on a hedged basis. अगर ये if it makes sense, versus the yield they are getting outside, they keep on doing it. तो अब अगर जैसा हमने दिखाया, बाहर की यील्ड कम हो गई है. जो 4.8 वगैरह था वो 4. ये देखिए 24 हो गया. तो दिस हैज फॉलन. ओके, इट मींस yield seeking guys should be looking at India. अब इसमें hedged cost बढ़ जाती है अगर रुपया डिप्रिशिएट होता है. नाउ दैट इट इज सीमिंगली स्टेबल, दैट विल रिड्यूस. तो आपको दिखेगा कि ओवरऑल सेलिंग शायद कम हो जाए. हमारी बहुत उम्मीद है कि कम हो जाएगी. दूसरा एक रीजन होता है वो ये कि जो लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, जो इमर्जिंग मार्केट फंड्स होते हैं, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं. रिलेटिव वैल्यूएशंस ये लोग देखते हैं. चाइना वाज चीपर, दे वेंट देयर. एंड दूसरा जो ड्यूटीज वगैरह का सब गेम चल रहा है उसमें सम कंट्रीज आर बेटर ऑफ वर्सेस समबडी एल्स. मनी हैज फ्लोन टू दैट कंट्री. नाउ पॉइंट इज, over last 10 years the relative valuations have never been better. तो हमारा एक प्रीमियम होता है ओवर अदर इमर्जिंग मार्केट्स, वो 10 साल का लो है. तो दैट अगेन इज अ वेरी नाइस स्टार्टिंग पॉइंट टू बी इन. तो जो फंड फ्लो हमसे दूर जा रहा है वो भी शायद वैल्यूएशन को देख के वो भी शायद घट जाए.
ओके, अगर हम इसको देखें तो ये समझेंगे कि यू नो वी इंटरेस्ट रेट्स आर द की मूवर। जो भी आप कह लो, जान फेब में बाहर वाले ने काफी बिकवाली की थी, बट उसके बाद 4 महीने खरीदारी की। ओके, बाकी सारे मार्केट में ऐसी कंसिस्टेंसी कहीं नहीं दिखी, ब्राजील में थोड़ी दिखी थी। और जुलाई अगस्त में तो ब्राजील और इंडिया दोनों जगह बिकवाली दिखी। सो दिस इज मोर टू डू विद इंटरेस्ट रेट्स एंड रिलेटिव वैल्यूएशंस। इसमें चाइना नहीं है, वरना चाइना को पैसे जाते हुए दिखते हैं। ओके, एक और इंडिकेटर होता है DXY। DXY बेसिकली गिव्स यू कि पैसा यूएस से बाहर जा रहा है या यूएस में जा रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग वाइल आप ये देखो, 109.10 का था जनवरी में, एंड इट्स बीन ओवर 100 फॉर अ लॉन्ग वाइल। नाउ दिस इज जस्ट अबाउट 98। इसका मतलब 100 के नीचे के नंबर का मतलब होता है पैसा इज गोइंग अवे फ्रॉम द यूएस, एंड दैट इज टिपिकली गुड फॉर रिस्क एसेट्स, गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट, गुड फॉर होपफुली इंडिया। तो ये जो जैसे जैसे ये नॉइज कम होगी, वैसे वैसे वो कम होता जाएगा। और अगर हम आज के दिन देखें तो द वर्स्ट ऑफ द नॉइज इज इन, होपफुली वी स्टार्ट टू गेट नाउ सम बेटर न्यूज। Typically in India, which is world's largest, strongly growing market, every fall has proved to be an opportunity to buy. The outcomes have been good. So we say SIPs are good, but dips are better. Now this is our next thought. This is time for alpha generation. इसमें हम खाली एक चीज याद रखेंगे कि अल्फा जब बनता है, मार्केट फॉलोज अर्निंग ग्रोथ। ओके, इफ यू गेट न्यू स्पेसेस इन द मार्केट, अगर हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो हमको ऐसी स्पेसेस ढूंढनी पड़ेंगी जो कि इंडेक्स से एक दर्जा ज्यादा ग्रो कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे 90 के दशक में सॉफ्टवेयर आई थी जो इंडेक्स में नहीं थी, नई स्पेस थी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की फॉर 10 years, and whosoever had it with all the volatility generated huge alphas. फिर 2002, 3, 4 में कई सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक आए, छोटे थे, पब्लिक सेक्टर बैंक उनसे बहुत बड़े थे, पर उन्होंने 15 से 20 साल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की, और मैनेजर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा अल्फा बनाया। बीच में यही चीज कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने की थी, रियल एस्टेट कंपनियों ने भी की थी। अगर हम अभी देखें तो इस स्लाइड को आप देखो, ये एक पहला पीरियड है हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी का कि कई सारी स्पेसेस एक साथ उत्पन्न हुई हैं, जो कि ये जो कॉम्बो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सस्टेनिंग फॉर मल्टीपल इयर्स का प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि हॉस्पिटल्स 12% इंडेक्स करता है, हॉस्पिटल्स प्राय 18, 19, 20 से ज्यादा करेंगे एज एन इंडस्ट्री एंड कंपाउंडिंग। ओके, GLP-1 जो पतले होने की ड्रग्स हैं, एंटी डायबिटीज, वी नो आर अ रेज ग्लोबली, तो यहाँ तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। लीशर लग्जरी, तो जैसे जैसे लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, वो घूमना फिरना शुरू करते हैं, अच्छे होटलों में जाते हैं, एयरलाइन से जाते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, तो ये सब अगर इन स्पेसेस में आप देखोगे तो ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। न्यू एज कंज्यूमर टेक, जो फूड वगैरह डिलीवर करते हैं, जो आपके पेमेंट फैसिलिटेट करते हैं, फिनटेक, जो आपको हमें लेट्स से ऑनलाइन खरीदने में मदद करते हैं, ऑल ऑफ देम वो ब्रोकर की शेप में हो सकते हैं, वो फिनटेक की शेप में हो सकते हैं, वो कंज्यूमर टेक की शेप में हो सकते हैं, आर ऑल ग्रोइंग वेरी स्ट्रांगली। अगर हम देखें तो कैपिटल गुड एंड इंजीनियरिंग, EVs are growing strongly, renewable power is growing very strongly, chemicals and electronic manufacturing। इन सारी स्पेसेस में आप देखो, मैंने आपको क्वार्टर के भी नंबर दिखाए थे, द ग्रोथ रेट्स आर एन ऑर्डर हायर देन द इंडेक्स। तो हम कहते हैं वही कॉम्बो है जो पहले सॉफ्टवेयर थे, बाद में बैंकों ने प्रेजेंट किया था, प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने, कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सस्टेनिंग फॉर लॉन्गर। हमको लगता है ये एक अल्फा कॉम्बो है।
वैल्यूएशंस में एक तरीका हो सकता है कि हम चार्ट देखें, दूसरा तरीका हो सकता है कि हम केवल ये समझें कि पिछले पिछले एक साल में मार्केट्स आर डाउन 1 से 2%, ओके, जबकि अर्निंग्स आर अप अराउंड 8%, तो नेट करीबन 10-11% वैल्यूएशन करेक्शन हो गई, राइट। उसके साथ आपको 1% से रेट कट मिल गया, साथ में जब लिक्विडिटी नेगेटिव थी उसके बजाय पॉजिटिव हो गई। सो कई सारी चीजें पॉजिटिव हो गई हैं। अभी आउटलुक में जीएसटी कट है, आउटलुक में और फर्दर रेट कट्स हैं। सो आरबीआई गवर्नर ने भी इंडिकेट कर दिया है यू विल नॉट फाइंड अस वांटिंग, तो वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन आ गई है। अब बेसिकली यूएस की जो ड्यूटी की वो है उसके चक्कर में सेंटीमेंट खराब हुआ है और मार्केट नीचे है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू आवर माइंड, जो हमारी रिलेटिव वैल्यूएशन दूसरों के साथ थी वो भी काफी ठीक हो गई है। तो अब आपको जो है अखबारों में, मीडिया में वैल्यूएशंस के ऊपर नेगेटिव नहीं सुनने को मिले, और रिलेटिव वैल्यूएशंस पे तो शायद पॉजिटिव सुनने को मिले कि अब बाकी लोग ज्यादा महंगे हो गए हैं, हम सस्ते हैं। इसमें एक चीज देखो, 12% अगर अर्निंग ग्रोथ होती है तो ये ना हमने सिंपल सा डीसीएफ किया हुआ है कि पी क्या सस्ता है। तो एक बहुत लोगों का ध्यान आता है कि लो पी इज चीप, हाई पी इज एक्सपेंसिव। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग सोचिएगा, आप करीबन 400 लोग हो कॉल पे, क्या 10 का पी सस्ता है, क्या 9 का पी सस्ता है, इज एन 8 पी चीप? डिसाइड अ नंबर। Okay, if all 400 of you agree that one number is below that is cheap, you will be surprised to find many large cap companies below that number. तो जैसे 3, 4, 5 पी में आपको सारी रिफाइनिंग मार्केटिंग कंपनियां मिल जाएंगी। थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो कोल इंडिया और ये जो फाइनेंसिंग कंपनीज है, आरईसी, पीएफसी वगैरह मिल जाएगी। तो अगर केवल लो पी सस्ता होता तो भाई ये तो कवर्ड कंपनियां हैं, लिक्विड हैं, लार्ज कैप हैं, तो इनको तो सर्किट 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 मार के 3 दिन में जो भी आपने डिसाइड किया 8, 9, 10 पी वहां तक पहुंच जाना चाहिए था। इनफैक्ट किसी भी कंपनी को जो भी आप सब सोचते हैं बेस मिनिमम, किससे तो चीप चीप ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता, वहां तक तो सीधा ही पहुंच जाना चाहिए था। देयर शुड बी नो कंपनी बिलो दैट नंबर, बट होती है, बड़ी कंपनियां होती हैं, जैन फेब में ज्यादा गिरती हैं और उसके बाद वापस भी नहीं आती हैं, राइट। यू हैव सीन दैट ऑल हैपन। तो ये मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं कि यू नो केवल पी does not indicate everything. It is growth, longevity of growth, and more importantly terminal value, which all goes into valuation। तो एक हमने छोटा सा काम किया है कि अगर एक कंपनी 12% पे ग्रो करे, इंडेक्स की करीबन इतनी ग्रोथ है, इंडेक्स की पी करीबन 20-21 की है, जो हर कोई कहता है कि ठीक है। तो अगर आपका एक स्टॉक है या एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है जो कि 10% हायर ग्रो करे, मतलब फॉर 10 ईयर्स, 10% हायर फॉर 10 ईयर्स कंपाउंडेड, समझिए 22% पे ग्रो करता है, तो उसकी वैल्यूएशन 60% ज्यादा हो सकती है। तो 20-21 के बजाय 32-33 हो सकती है, बट ऐसी कंपनी मिलनी चाहिए, ठीक है ना। तो वी विल शो यू, सो दिस इज हाउ इट इज। और अगर आप बाजार में भी देखोगे तो जो कंपनियां 20-25% के आसपास की ग्रोथ वाली होंगी वो करीबन 30, 32, 35 के पी पे चल रही होंगी, फॉरवर्ड पी पे, हिस्टोरिक नहीं, फॉरवर्ड पी पे। एंड दैट विल हेल्प यू ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग। ओके, अब हम अपने अगले थॉट पे आते हैं, हाई बीटा फंड वर्सेस लो बीटा। ये थोड़ा सा समझने का है। देखिए, हमने शुरुआत की 2 कंपनियों की एक ही जगह,
100 रुपए की दो कंपनियां हैं। ओके, एक कंपनी ने एक साल में 20% की ग्रोथ दी, दूसरी कंपनी ने एक साल में 12% की ग्रोथ दी। बाकी सब कुछ चीजें अगर सेम है तो पहली कंपनी 120 पे होनी चाहिए, दूसरी कंपनी 112 पे होनी चाहिए, राइट। तो अब अगर कोई बीटा मेजर करे, अगर दूसरी कंपनी हम इंडेक्स माने, 12% मैंने इंडेक्स का नंबर लिया, अगर दूसरी कंपनी को हम इंडेक्स माने तो पहली कंपनी का भाव ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा है, तो क्या होगा, उसका बीटा ज्यादा दिखेगा। तो आप देखोगे कि जो सारे हाई ग्रोथ कंस्ट्रक्ट होते हैं हैव हाई बीटास, ये गुड बीटा है। दूसरा तरीका यह है कि ये हमने यहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। दूसरा ये है कि एक कंपनी में नॉइज जबरदस्ती ज्यादा है। अब वो इसलिए भी हो सकती है कि उन्होंने लोन लिया हुआ है, उनके प्रमोटरों के पास लोन है, कभी कोई खींच रहा है, कभी कोई खींच रहा है, और उस नॉइज की वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे ज्यादा होता है। वो गुड बीटा नहीं है, वो बैड बीटा है। सिमिलरली, अगर आपका कमोडिटी कैरेक्टर है, एक दिन स्टील का भाव ऊपर जा रहा है, दूसरे दिन नीचे जा रहा है, कोई भी कमोडिटी हो, तो उसकी वजह से स्टॉक प्राइस कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, वो बैड बीटा है। अगर आपकी कंपनी में लीवरेज है, वो बैड बीटा है, तो उससे भी वोलेटिलिटी आती है और बैड बीटा होगा। तो आइडिया शुड बी टू हैव गुड बीटा। अब लोगों की समझ ऐसी है कि हाई बीटा इज बैड। वो मेरी समझ से इसीलिए होता है क्योंकि बीटा नामक इंडिकेटर को आप जब बाजार गिरा होता है तभी देखते हो, और तब हाई बीटा वाले ज्यादा नीचे दिखते हैं। बट आप सोचो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो मार्केट ऊपर जाती है ना। तो आप बताओ कौन सा कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, राइट। जो हायर बीटा होगा 2-3 months इनटू गुड पीरियड विल हैव मच बेटर आउटकम्स। इसमें खाली एक ही वो है कि बीटा कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है, तो वो देखना है। पर दैट इज द होल थॉट कि अगर आप कंसिस्टेंटली हाई बीटा कंस्ट्रक्ट करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी आउटलुक, आपकी रिटर्न आउटकम्स कैन बी बेटर वर्सेस नॉट। पर high beta should be on good causes. The only good cause is high earnings growth, high sustained earnings growth. तो उस समय तक भी हाई होनी चाहिए और आगे भी हाई रहे, is the ideal combination. It should not be leverage, noise, etc. तो अगर आप देखो तो दो इंडेक्स हैं जो बहुत सारे लोग बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, Nasdaq एंड S&P 500. Nasdaq is higher growth, has higher beta, एंड अगर आप वर्स्ट टाइम से भी शुरू करो, जनवरी 2000, उसके बाद Nasdaq गिर गई थी जोर से, येट द आउटकम्स आर फार बेटर वर्सेस S&P 500। फार फार बेटर, मतलब 5.25 टाइम हो गया, ये 4.5 टाइम हुआ है। एंड इसके बीच में किसी भी 3 से 5 साल का पीरियड ले लो, Nasdaq would end up looking better. So more and more you look at us, our constructs are like, Nasdaq, high growth, high innovation, newer tech, जहाँ पे companies which are disrupting the status quo is what we have in the house. That is the manner of understanding us. Second, दो दो चीजें हैं। एक, पहले लोगों का बहुत रिक्वायरमेंट होता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज कि इंडेक्स अगर मान लीजिए एक तरीके से चलता है तो उसके +-2%, +-3% की अगर आपकी परफॉर्मेंस आती है तो यू आर डीम्ड टू बी कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स। बट आप सोचो, किसी भी एक इन्वेस्टर, आप लोग हो कॉल पे, किसी भी एक के पास एक फंड तो नहीं है। अगर आपने दो कंसिस्टेंट फंड लिए हैं, एक का थोड़ा इंडेक्स से ज्यादा, एक का इंडेक्स से थोड़ा कम, आपका एवरेज इंडेक्स आता है, उस पे आप एक्टिव मैनेजमेंट की फीस दे रहे हो। सेम इंडेक्स जो है अगर आपने पैसिव में लिया होता तो फीस कम पड़ती। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है
अगर आपको इंडेक्स ही चाहिए तो इंडेक्स फंड्स आर बेटर। मोतीलाल रन्स इंडियाज लार्जेस्ट स्वीट ऑफ इंडेक्स फंड्स, आप उसको देख लो। आप सोचो, थोड़ा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जिसकी लोग बहुत डिमांड करते हैं डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ इन्वेस्टर, इट में एक्चुअली बी हर्टिंग देयर ओवरऑल कॉज। दूसरा भी एक थॉट है, वो ये कि लंबे फंड्स, अगर आपके पास 8-10 फंड है और सबके पास होंगे कि अब जो है 46 फंड हाउस हो गए हैं, 1550 स्कीमें हो गई हैं, सबके पास 8-10 फंड है, और अगर फंड मैनेजर लंबे लंबे फंड बनाए तो आपके पास 500-600 स्टॉक हो जाते हैं। वंस अगेन यू आर ओनिंग द मार्केट एंड पेइंग एक्टिव मैनेजमेंट फीस, आउटकम जो आप चाहते हो नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा सस्ता तो पैसिव से मिल जाएगा। Think of it. So there is a way out, and hence you will understand why we are so different. ओके, फिर एक और थॉट है कि द साइज प्रोवाइड सेफ्टी। बड़ी कंपनियां सेफ होती हैं, बड़ी कंपनियां सेफ होती हैं, तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं बाजार में आया था, 94 का टाइम था, उस समय ना इंडेक्स में आपको हिंदुस्तान मोटर भी मिल जाती, प्रीमियर पद्मिनी आके जाती रहती थी। आज के दिन कंपनियां कहाँ हैं पता नहीं, है ही नहीं। और भी कुछ थी, अगर उस समय का इंडेक्स देखोगे तो जो कंपनियां धाराशायी हो गई, प्रैक्टिकली और 4-5 कंपनियां बची होंगी, मे बी 6-7 कंपनियां बची होंगी। तो उससे आपको एक मैसेज मिलता है। चलो, लोग कहते हैं कि वो बहुत पुरानी बात हो गई, उस समय इंडिया ने बाजार खोला था, कंपटीशन बढ़ गई, कुछ लोग नहीं सरवाइव किए, ठीक है। तो लेट्स कम मोर रिसेंट। 2004 से 8 के बीच में कई सारी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां आई, राइट। एक आध तो पेनी स्टॉक हो गई, लार्ज कैप होती थी। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां आई, कई सारी पेनी स्टॉक हो गई, कई सारी खत्म हो गई। मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां तो इंडेक्स की थी, खत्म हो गई, है ही नहीं। तो साइज डज नॉट प्रोवाइड सेफ्टी। अगर आप इंडेक्स भी देखो तो हर 6 महीने में उसमें बदलाव होते हैं, कुछ 2-3 नाम चले जाते हैं, कुछ 2-3 नाम आ जाते हैं। तो 2-3 नाम जो आते हैं वो कैसे आते हैं, उन्होंने क्या ठीक किया है? उन्होंने शायद कॉन्टिन्यूअस लॉन्ग पीरियड ग्रोथ अचीव की है। कि 2000 के टाइम पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडेक्स में नहीं था। कई साल उन्होंने अच्छा काम किया तो कई सारे इंडेक्स में आ गए। सॉफ्टवेयर शायद पहला जो इंडेक्स में आया होगा वो 2000 के बाद आया होगा। तो साइज डज नॉट प्रोवाइड यू सेफ्टी, it is continuous long period growth that provides you safety, is the thought that we want to share. Static anything does not गिव यू व्हाट यू वांट। मतलब अगर आपको लगे कि ये मेरा है, मैं पकड़ के बैठ जाऊं एंड इट विल कीप डूइंग वेल, इट डजंट हैपन। बदलाव करना जरूरी है और ग्रोथ के साथ रहना जरूरी है, दैट अलोन कैन हैव गुड आउटकम्स। तो कमिंग डाउन टू आवर वी पोजीशन वेरी क्विकली, वी से ये देखिए, दो तरीके होते हैं पैसे बनाने के। अभी आप समझोगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पहले हमने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई। एक होता है ग्रोथ कि भाई 10 रुपए की ईपीएस 12-13 रुपए हुई, फिर 16-17 रुपए हुई, फिर 20 रुपए हुई, फिर आगे बढ़ती गई। तो वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज इज इंक्रीजिंग, मार्केट ओवर टाइम विल रिफ्लेक्ट दैट, दैट इज ग्रोथ इन्वेस्टिंग, विच इज व्हाट वी डू। We see ourselves as the only pure play growth investor in the country. The belief that market over time follows earnings growth. Markets are slave of earnings. दूसरा होता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, 100 रुपए की चीज 50 रुपए की मिल रही है किसी वजह से, आप अगर लेते हो ये सोच के लेते हो मेरे लेने के बाद वजह चेंज हो जाएगी, अगर हो जाती है तो 50 से 100 की जर्नी में आपके पैसे बनते हैं। हम ये नहीं करते हैं। तो हमारा क्या कहना है कि हैव अस ऑन योर ग्रोथ साइड ऑफ द पोर्टफोलियो, पेयर अस विद द बेस्ट ऑफ वैल्यू, काम खत्म। मैं आपको दिखाऊंगा हमारे सारे कंस्ट्रक्ट जो हैं 20 से 35 स्टॉक के बीच के होते हैं हमारे। आप दो भी फंड लोगे आपको 40-42 स्टॉक मिलेंगे।
एक वैल्यू का फंड ले लीजिए, 80 से 100 स्टॉक मिलेंगे, टोटल आपका पोर्टफोलियो 140 नाम में सिमट जाता है, जो आज के दिन प्राय 500-600 नाम तो मिनिमम होंगे। ये भी ऑप्टिमम नहीं है, एक्चुअली 30 के आसपास का नंबर होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि अगर आपको वोलेटिलिटी डाइजेस्ट होती है, we say we will be consistently inconsistent because we are so growth focused। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया, ग्रोथ से अच्छा बीटा आता है, बट अच्छा बीटा होने से भी जब मार्केट गिरती है तो लोग ज्यादा गिरते हैं। अगर आपको वोलेटिलिटी डाइजेस्ट होती है तो बी ओनली विद अस। Happily, we have been growing quite strongly. Last month was again, these are numbers, how we have grown. तो हमारा समा बनता जा रहा है, आप लोगों की वजह से बनता जा रहा है। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्टार्टेड a process to engage directly with our direct investor who we believe are the cause for our doing well. Now, growth as a style gets tailwinded if rates are low। तो वो आपको दिख गया, शायद अगला फेड का रेट भी कम हो, इन्फ्लेशन इज लो, वो आपको दिख रहा है, DXY इज डाउन। तो कई सारे इंडिकेटर जो हैं आज के दिन हमको टेलविंड प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम इसीलिए सोचते हैं कि आज का टाइम तो हमारा टाइम है। अभी तक हमने अच्छा किया, वो तो शायद दूसरे का थोड़ा सा टाइम ले लिया। हमारा टाइम तो रिलेटिवली स्पीकिंग अब आया है। अगर आपको सर देखिए, आप कैसे भी देखो, वी आर वेरी रेलेवेंट। अभी जैसे ये हमारा लार्ज एंड मिड कैप फंड है, आपके पास कोई और लार्ज एंड मिड कैप फंड होगा, उससे हमारी ओवरलैप जीरो है। अगर आप वैल्यू वाले के साथ देखो तो जीरो, HDFC के साथ 7% की ओवरलैप है। हमारा मिड कैप फंड, शायद मैक्सिमम लोग जो आप लोग हो मिड कैप लेके आए होंगे, तो 2% की ओवरलैप, 7% की ओवरलैप। हम वो भी सर्व करते हैं। अगर आपको डिसजॉइंटेड फंड्स चाहिए तो वी प्रोवाइडेड, हमारे ओवरलैप किसी इस पे पन्ने पे हाईएस्ट नंबर या 25% दिखता है। वैसे ही हमारा जो है, शायद कंट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑल्टरनेट हाउस है। ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है फाउंडर्स फंड। इसका भी, किसी का भी आप देखो, ओवरलैप विद कंपटीशन इज वेरी वेरी लो। तो अगर आपके पास कुछ भी और है, अगर वो वैल्यू का होगा, हम कहते हैं हमको जोड़ो, हम ग्रोथ के हैं, कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। थोड़ी ये देखिए, हमारा चाहे आप म्यूचुअल फंड लो, चाहे हमारे ऑल्टरनेट लो, 20 से 35 स्टॉक में पूरा घर बनता है। स्मॉल कैप भी हमारा 50 नामों का है, लार्ज कैप में 30 प्लस IPOs है। तो ये अगर आप देखो तो आउट ऑफ द विंडो परफॉर्मेंस है थ्रू IPOs। ऑल्टरनेट्स हमारे सारे 30 के नीचे के। ऐसा हाउस दूसरा नहीं है। वी आर द ओनली हाउस हु प्रैक्टिस हाई कन्विक्शन इन्वेस्टिंग अक्रॉस। और चाहे आप म्यूचुअल फंड में आओ, चाहे आप ऑल्टरनेट में आओ, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। वी ट्राई एंड डू व्हाट वी डू बेस्ट अक्रॉस। मैनेजर का थोड़ा फर्क हो सकता है, दैट्स इट। कुछ एक चीज जो हमने केवल डायरेक्ट वालों के लिए रखी है, मतलब वी हैव अ एक्टिव मोमेंटम फंड। हैप्पी टू शेयर कि जब हमने रेज किया था वो केवल 40 करोड़ का था, आज के दिन वो 140 करोड़ का हो गया है। स्पेशल सिचुएशंस अभी पिछले हफ्ते बंद हुआ, बाजार निगेटिव है, पर दिस फंड इज डूइंग वेल, इट इज ओवर 10। अच्छा डेल्टा उसने बना लिया है। एक्टिव मोमेंटम अगर आप देखो तो जिस पीरियड में मोमेंटम इंडेक्स धाराशायी हुआ पड़ा है, उस पीरियड में एक्टिव मोमेंटम फंड ने करीबन 5 से 6% की अल्फा निकाल दी है ओवर इंडेक्स। ये हमने 1 अप्रैल से निकाला है। सिंस इंसेप्शन देखेंगे तो सेम परफॉर्मेंस आ चुकी है। बड़ी एक जो गैप थी हमने भर दी है। ये देखिए, हम करते क्या है कि सारी स्पेसेस जहां पे ग्रोथ है, जो हमने पहली एक शीट दिखाई थी, और मोमेंटम है, दोनों का कॉम्बो है, उसमें हम नाम डालते हैं। जैसे ही मोमेंटम जाती है बाहर, कुछ दिन नेगेटिव मिलते हैं, हम बाहर निकल जाते हैं। छोटे होने से हमको वो एडवांटेज मिलती है, छोटे होने से हमको वो एडवांटेज मिलती है। सम ऑफ दीज विल स्टे स्मॉल, धीरे 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 बढ़ेंगे विद टाइम, होपफुली विद परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमारा सारा फोकस परफॉर्मेंस पे है। ये नहीं कि बाकी फंड परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमको लगता है थोड़ा
आउटकम्स अच्छे आएंगे। ओके, ये सारी परफॉर्मेंस है, ये आप लोग ट्रैक कर ही रहे होगे हैप्पीली। ये पिछले महीने एंड की, ये 13th अगस्त की परफॉर्मेंस है। नाउ थिंग्स हैव इम्प्रूव, दिस इज हाउ वी लुक। लॉट ऑफ पीपल were concerned about our mid-cap performance. Happy to say this 11 is now 4th, 5th. Let me see if I can showcase that to you. Just hold on. हाँ, ये जो है इससे आपको समझेगा कि शो, ये देखिए, ये कल तक की परफॉर्मेंस है। राज दिख रही है ना? Yes, sir, we can see. So this is how our mid-cap fund has come back now versus 11 on that sheet. We are sixth. Hopefully, we improve further as we go forward. ये जो थी, ये हमारी मोमेंटम फंड की परफॉर्मेंस है। यस, ये देखो, ये आउट ऑफ एवरीथिंग, इफ यू सी दिस परफॉर्मेंस, इट इज लुकिंग क्वाइट गुड सिंस इंसेप्शन। ये देखिए, पहले ना हमारा फंड इन्वेस्टेड नहीं था और इस पीरियड में मार्केट थोड़ा सा ऊपर सरक गया था, तो हमको ड्रैग आ गया था। अगर आप इस पीरियड से देखो तो जो ये पूरा गैप है -0.9, इन 8.5% की गैप है। ओके, ये पूरे 8.5% की गैप भर चुकी है। दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग मोमेंटम फंड। Small in size, 140. Size as advantage. This is what I want to share with you. Try and use it to your benefit. हमारे फंड वी ब्रिंग द टॉप्स मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, 411 फ्लेक्सी कैप है हमारा। ये सारे हमारे फंड इन द ऑर्डर ऑफ साइज, लार्ज एंड मिड कैप रैंक 2, रैंक 1, ELSS भी टॉप आता है। फोकस्ड फंड एक हमारा अच्छा नहीं चल रहा है, स्मॉल कैप भी अच्छा है। बिजनेस साइकिल इज रैंक 1, मल्टी कैप इज रैंक 1, लार्ज कैप इज रैंक 1। भैया लॉन्ग डिस्टेंस ये देखिए, लार्ज कैप हमारा 14% रिटर्न है एक साल की, 9% है 6 महीने की, रैंक 5, रैंक 1। हाईएस्ट रिटर्न प्रोवाइडर लार्ज कैप, उसका कंस्ट्रक्ट अच्छा है। 80% लार्ज कैप, 20% वो आईपीओ में इन एंड आउट करता रहता है। मैन्युफैक्चरिंग फंड अगेन वी आर रैंक 1। डिजिटल वी आर अप देयर। एक्टिव मोमेंटम आप देखो कितना बड़ा अल्फा है। इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज रैंक 1, इंफ्रास्ट्रक्चर रैंक 1। दिस इज द हाउस, और ये हमारे ऑल्टरनेट्स। इसको मैं सीधा यहीं दिखा देता हूँ। वी ब्रिंग रैंक नंबर 2, 3, 4, 5 इन द इंडस्ट्री, 1, 2, and top 4 in the industry over 2 years. Have a look at us, guys. We are very different. और ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अभी अगर आप हमारे साथ मिड कैप में आए हो, which is what most of the people have, we say LMC pairs very well. इसमें हमारे इंटरनली भी ओवरलैप नहीं है। अगर आप मिड कैप के साथ आए हो और एक्टिव मोमेंटम देखते हो तो 11% की ओवरलैप है। तो ये दो फंड हम आपको दिखाते हैं एज द नेक्स्ट वन आफ्टर मिड कैप। इसको पेयर करिए, अच्छा आउटकम रहेगा। Okay, this is what we do as a process, so that you guys know longevity through themes I showed you. So all of the themes are included. Most of our constructs have zero banks, zero IT, zero commodities, zero staples. Okay, zero autos. Autos मतलब वो पेट्रोल डीजल वाले। सुपर हाई ग्रोथ, कहीं पे आपको चवन्नी अठन्नी नहीं दिखती। ये म्यूचुअल फंड है 34 नामों का। सुपर हाई ग्रोथ ऑन ईच नेम। दिस इज व्हाट इट इज गाइस। और जैसे ही आप ये थीम्स देखते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ग्रोथ 2 साल की नहीं, कई सालों की कंटिन्यूड रहेगी आगे, विच इज व्हाट वी वांट। ये बाकी स्पेसेस, राइट, एंड सेम थॉट। कहीं ज्यादा वेटेज नहीं, कहीं चिल्लर नहीं। और अगर आप ये देखो तो क्वालिटी बेटर देन इंडेक्स, ग्रोथ वे बेटर देन इंडेक्स। 42% वर्सेस 15, और वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था जब मैंने इस क्वार्टर के नंबर दिखाए। और ये देखिए, इंडेक्स अगर 22 पे है तो हम 32 पे हैं। तो वो भी हमने शीट दिखाई कि भाई 10% हायर ग्रोथ वुड मीन 60% हायर वैल्यूएशन, तो 15 की बजाय 25 बिकम्स द ब्रेक इवन, सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट। अब ये जो नंबर है ये हमेशा नहीं रहेगा। चूंकि ये नंबर हमेशा नहीं रहेगा, इसलिए आप देखोगे कि हम लगातार पोर्टफोलियो में नई नई चीजें डालते हैं, पुरानी चीजें निकालते हैं। एक नाम चेंज हम 1 महीने में करने की कोशिश करते हैं।
कीप द पोर्टफोलियो फ्रेश। दिस इज व्हाट इट इज। एक चीज और दिखाता हूँ, फाउंडर्स फंड, ये हमारा ऑल्टरनेट का फंड है, पीएमएस एआईएफ सब पे है। वेरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर। सेम तरीके से आप देखोगे, वी डू द सेम स्टफ अक्रॉस द हाउस। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थीम, फ्लैट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट, थोड़ा सा टाइटनेस ज्यादा है वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। बट मोर इम्पोर्टेंटली फॉर पीपल, फॉर माई लिसनर्स हु कैन डू 5 crores और मोर चेक, ये हमारा एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है, विच इज वेयर वी मिक्स लिस्टेड अनलिस्टेड। मतलब हम 5 करोड़ से ऊपर कहते हैं, 3 तक एक्सेप्ट कर लेते हैं, लास्ट के 80 से 100 के बीच के नंबर बचे हैं हमारे पास, फिर बंद हो जाएगा, ये महीना आखिरी है। इसमें हम लिस्टेड अनलिस्टेड कॉम्बो रखते हैं, अप टू 30% कैन बी लिस्टेड। ओके, इसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखो तो ये रही फाउंडर की परफॉर्मेंस, 5%, एक साल का अल्फा 13% सिंस इंसेप्शन। ये हमारी एक पहली सीरीज थी, उसमें हमने एक साल में 10% के अल्फा निकाली वर्सेस 5, 2 साल में 16% के अल्फा निकाली वर्सेस 12.25। ये बंद हो चुकी है। ये तीसरी अभी खुली है जहां पे आउटकम्स आर सिमिलर और टैड बेटर देन सेकेंड वन। अब इसमें क्या है कि जो ये दो नाम है, जेप्टो और जेन रिसोर्स, वो कॉस्ट पे हैं। और हमको लगता है कि व्हेन दी प्राइस डिस्कवरी हैपन सून इनफ, जेन का आईपीओ आ जाएगा सितंबर अक्टूबर में, जेप्टो का एक अगले राउंड की फंडिंग आ जाएगी। उसमें पेपर में ही आया था कि 7 बिलियन की वैल्यू पे हो रही है। हमारा जो ये माल है वो ये माल 5.1 पे, हमने इसको बढ़ा के 8% कर लिया है, वो 5.9 की एवरेज, या 5.4 5.5 मान लो। इन दोनों का रिप्राइस होगा, इस पे कुछ पैसा टेबल पे है। सो फॉर गाइस हु कैन डू, मतलब ये ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट के नंबर्स, प्लीज हैव अ लुक एट दिस वन, वेरी डिफरेंट, देयर इज नो हाउस हु डज इट। So let me stop here and let me take questions. Hmm, ये क्या हो गया? अरे, ये दो 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 चैट बॉक्स कैसे बने हुए हैं? ओके, शुड आई लुक एट द, यू आर ऑन म्यूट। So you can refer to the Q&A box. All the questions have been listed there. हाँ, तो चलो, आप लोग ने बोला हिंदी में, मैंने हिंदी में बोलने की बहुत कोशिश की, होपफुली इट हेल्प। हाँ, तो हिंदी तो कर लिया, वो मैंने देखा नहीं था, बट मैंने पूछ लिया। अरे, एक आदमी दुखी होके चला गया, चलो ठीक है। अरे ओडिया, ओडिया पहले बोला। मैं समझता ओडिया, बट बोलते पारबे ना। Sir, you can refer to the Q&A box there. Q&A ही देख रहा हूँ मैं। अच्छा, सॉरी, ये वेबिनार चैट में है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। Yes. हाँ, यू मेंशन ड्यूटी ऑफ 500 होना, शुड इट नॉट बी, नहीं, ये वी शेड ची। देखिए मैंने क्या बोला, अगर आप माल यहाँ से बाहर बेच रहे हो, 1 लाख का माल है, 50% की ड्यूटी है, तो 50,000 लगेगा। बट ये आप चेक करो अपने सीए से, या जो आदमी धंधा करता है, कि अगर आपने ये दिखाया कि आपकी एक कंपनी है ब्रुसेल्स में, उसने आपको माल दिया जॉब वर्क के लिए, ठीक है, तो उसने आपको माल लेंड किया, एक हीरा आपको भेजा, आप उसको पॉलिश करोगे, फिर क्या होएगा, आप उसको पॉलिश करके वापस भेज दोगे। तो ये एक्चुअली सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें ये हो सकता है कि कोई ड्यूटी ना लगे, हो सकता है। तो एट वर्स्ट, अगर आपने 1,000 रुपए की वैल्यू ऐड की पॉलिशिंग करने में, तो वो 1,000 रुपए पे 50 टका लगेगा, तो 500 रुपया लगेगा। तो आइटम की कॉस्ट कितनी है उसका उसमें कोई मतलब ही नहीं है। इज वन वे आउट। ये जो है, मतलब जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बताया, बट बेस्ट पीपल वुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, डू चेक विद दैम। Anil Verma ji, my team will get in touch with you on this one. हाँ, वी शेट विल, वीक रूपी विल गोल्ड डू बेटर। अभी गोल्ड कितना अच्छा करेगा तो नहीं पता, बट वी ऑल्सो एक्सपेक्ट गोल्ड टू कंटिन्यू टू होल्ड। और इसीलिए हमारे फंड में अगर आप देखोगे तो गोल्ड लेंडर्स हमने इंक्लूड किए हैं।
Uh, so Prinshu Kumar ji, FPI outflowing is impacting the market for sure, और साथ में जो ये नेगेटिव न्यूज फ्लो है, ये मैंने बताने की कोशिश की कि क्यों मुझे लगता है कि एफपीआई की आउटफ्लो कम हो जानी चाहिए। एक रिलेटिव वैल्यूएशन बहुत चेंज हो गई है पिछले 2 महीनों में, और दूसरा बाहर इंटरेस्ट रेट गिर गए हैं। रेट कट अगर आती है बाहर और गिर जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे एफपीआई इंडिया में रेट के लिए आते हैं, तो स्टॉक खरीदते हैं, फ्यूचर बेचते हैं और बीच का डिफरेंस लेते हैं। तो वो एक्टिविटी फिर वापस ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, तो हमको लगता है नेट सेलिंग घट जाएगी। दैट वाज द केस आई वाज मेकिंग। मोहन राठौड़, नॉन एक्टिव मोमेंटम फंड। मोहन राठौड़ जी, जो हमने परफॉर्मेंस एक्टिव मोमेंटम फंड की दिखाई, वो इस पीरियड की दिखाई जब मोमेंटम एज अ स्टाइल वाज नॉट वर्किंग एंड येट वी वर डूइंग सो वेल। आई शोड यू कि वी मेड अप क्लोज टू 8.5% ओवर 7th of April till now. As momentum comes in the market, हर 2 से 3 साल में, बाहर पकड़ लीजिए 5 साल में एक पीरियड आता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आती है मार्केट में। मोमेंटम मीन्स कि सेम स्पेस कंटिन्यूज टू डू वेरी वेल। तब तो मोमेंटम एज अ स्टाइल गिव्स यू आउटसाइज रिटर्न्स, पर अभी के टाइम पे जब कभी हाँ कभी ना का पीरियड चल रहा है, येट वी हैव डन वेरी वेल। वी आर टॉप 10% परफॉर्मर इन द मार्केट। तो मुझे लगता है कि ये फंड आपको जरूर देखना चाहिए। हमारा साइज चूंकि बहुत छोटा है, इससे ये एडवांटेज आता है। तो सिंगल स्टॉक अवॉइड करेंगे। अर्गिया नस्कर, हाउ नाउ डी आई एन एफ आई एंड म्यूचुअल फंड। यस। सो इसमें अर्घ्या जी, आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि एफपीआई जो है यील्ड फोकस्ड होता है। अभी उसको वोलेटिलिटी दिख रही है तो वो बाहर चला गया, जैसे ही वो स्टेबिलिटी होगी वो वापस आ जाएगा। अभी आपको सेलिंग कम होती हुई दिखनी चाहिए। हम दिस इज अ सेशन दैट वी कीप डूइंग। वी कैन चेक बैक ऑन दिस इन द नेक्स्ट 10-15 days as well. Now, this is the construct. This is a very good question. You are getting DII's continuous buying, and this month is no different versus last month. Agar if FPI stop to sell, then suddenly you get a month which is very strong, So अभी ये जरूर है कि there are a lot of IPOs which are happening, but वो तो हो ही रहे हैं. So today they are part of the equation. अगर एफपीआई सेलिंग कम हो जाती है, यू विल फाइंड द मार्केट कम बैक एंड टेक स्टेबिलिटी एट अ बेटर लेवल्स। जैसा हमने बोला कि ओवर अ ईयर वी हैव गॉट 8% अर्निंग इंक्रीज, मार्केट्स आर डाउन 2%, सो दैट्स अ प्रीटी गुड स्टार्टिंग कॉम्बो। दीपक, अभी आप बताओ, आर्या, व्हाट worse can happen? मतलब we got a 50% duty, one of the highest in the world. Okay, spaces which are not touched are not touched for anybody. तो अब इससे खराब क्या हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो या तो सेम रहेगा या बेहतर होगा। बेहतर होने की गुंजाइश ज्यादा है। अगर बेहतर होने की गुंजाइश है, गिवन द फैक्ट कि वी आर द थर्ड और द फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली, एंड फॉर स्टफ दैट यूएस वांट्स टू एक्सपोर्ट वी मे बी द लार्जेस्ट। तो बेहतर होने की उम्मीद है ना। तो अगर बेहतर होने की उम्मीद है तो दिस कट इन द मार्केट शुड प्रूव टू बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लुक एट इट। दीपक जी, थैंक यू सो मच for your kind words. Transmission and transformer and transmission sector, we are pretty positive. आप अगर हमारा स्मॉल कैप फंड देखोगे तो उसमें आपको ट्रांसफॉर्मर के नाम मिल जाएंगे। ट्रांसमिशन तो हमारे प्राय सब फंड्स में है, एलएमसी में भी है, फाउंडर्स में भी है। सो मोटर ट्रांसमिशन वाले, value migration, every fund of ours has good transmission exposure. Like active momentum fund, active momentum fund में तो तीन तीन नाम है, तीनों है ट्रांसमिशन के। So this is a space which is working well, so that finds representation. मोहम्मद आसिम, आई कुडंट अंडरस्टैंड, क्या चीज एक्सप्लेन करूं?
What P is justifiable for sustained expected earning growth of 20%? Amit Gupta ji, hi again. So 12% is 22, 1% extra for 10 years is 5%. ये rule of thumb ले लीजिए. तो 8% एक्स्ट्रा 8% एक्स्ट्रा मतलब 40% मोर. सो 22 के ऊपर 40, करीबन करीबन 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका. 30 का पी जस्टिफाइड हो जाता है. So if you are getting a name somewhere between 25 and 30, it is good. 10% higher growth, sorry, growth of 20% for 10 years. हाँ, वो उसका ख्याल रखिएगा. Abhishek Vijay, from the viewpoint of FPIs, why would they want to invest in it compared to Abhishek Vijay? आज के दिन FPIs के लिए इंडिया की fundamental story is not there. And hence we never made a case कि FPIs would come back and be a net buyer. It is the same money which is sloshing around. Biggest part of FPI that comes is for BRICS. ब्राजील से यूएस की लड़ाई है, रशिया से लड़ाई है, इंडिया से दुखी है, चाइना से दुखी है, तो कहानी क्या बची? तो ब्रिक फंड्स विल नॉट गेट मनी, इमर्जिंग मार्केट फंड्स विल नॉट गेट मनी. इट इज इम्पॉसिबल टू सेल इमर्जिंग मार्केट फंड्स ग्लोबली. नहीं आएगा पैसा. इट इज जस्ट दैट कि सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ मनी जो एफपीआई के अंदर काउंट होता है इज देयर फॉर यील्ड्स. वो क्या करते हैं, अगर बाहर 4.2 मिल रही है, रुपी डॉलर स्टेबल है, ठीक है, हेज्ड में अगर आपने इंडिया में कैश खरीद के फ्यूचर बेच दिया, ओके, यू अर्न मोर देन, इफ यू अर्न मोर देन व्हाट यू मेक अब्रॉड, यू विल कम. तो वो इंडिया के लिए नहीं आ रहे, वो यील्ड के लिए आ रहे हैं. तो उसकी वजह से जो आपको दिखेगा कि लार्जर कैप जो थोड़ा सा हमारे वीक हुए, विल अगेन स्टेबिलाइज. जो पूरा एफ एंडो वाला पार्ट है शुड एक्सपेक्ट टू स्टेबिलाइज. आपको टोटल एफपीआई सेलिंग रिड्यूस होती हुई दिखे. इसका फर्क क्या पड़ता है कि जब वो ये सेम एक्टिविटी रिवर्स होती है तो आपको बिकवाली दिखती है, फ्यूचर में बाइंग दिखती है, बट यहाँ पे बिकवाली दिखती है. बिकवाली दिखने की वजह से दैट हैज टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय इंडियन पब्लिक म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा. तो रुपया लग जाता है. सो भले ही दे आर कमिंग हियर फॉर यील्ड्स, बट द पॉजिटिव थिंग इज कि दे डू एंड अप stocking a stock, let me put it this way. And then and giving rupees to Indians with which they can buy something else. So एक positive रूप बनता है market का. That is the impact of FPIs. That's good, existing. Venkatramanji, you keep tracking active momentum fund. It's very different construct versus flexi. Flexi में what we do is find out spaces where there will be high growth and try and cover most of those spaces. So we have several flexi fund. We have flexi cap fund. We have LMC. We have multi cap fund. We have active momentum fund. We have business cycle fund. And we have innovation fund. All of these funds have the ability to invest across market caps for growth. So the difference is other funds, will find names which best suit a space, build the fund, and then wait for momentum to happen for good outcomes. So there is a lag between spotting a name and momentum to happen. In an active momentum fund, it is opposite. We already know the spaces. We don't get in till we spot a momentum. So we leave something on the table. तो वो एक फर्क है in periods when the same space does very well. तो जो ये lag होता है that will reduce and the outcomes will hence tend to be very good. So two very different ways of building portfolios. I think small size gives us a large advantage. We want to keep it small. Jivin Roy, Jivin Joy, yes, it is a good idea to invest in index funds only because
versus what you guys are doing today. If you have 10 funds in your portfolio and disjointed one, you are owning the market, better is to invest into index fund. You can touch base with our team. Our team can get in touch with you and handle you towards that. We run India's largest range of index funds with some of the least tracking errors. But जैसा मैंने कहा कि this is time for alpha. There are many new spaces which are coming up, which are growing very fast. In fact, for a lot of those spaces like capital market, like manufacturing, we have our own sectoral funds. Some of them can be active, some of them can be passive. You could build your own diversified fund de facto by using our active and passive sectoral funds. विजय कुमार टॉकर पेंट सेक्टर सर देखो ज्यादा ग्रोथ कभी भी नहीं थी उसमें लुक्ड गुड दिस स्पेस लुक्ड गुड इन 2008 to 2020 period. It was not good before that, it's not good after that, because now there are other spaces which are growing faster. In 2008 to 20 period, paint sector provided consistent growth, maybe of a small order, but index itself wasn't growing at all in that period, so it looked good. रेखा राम मोतीलाल ओसवाल में बिलीव करता, इसलिए धीरे धीरे मैंने इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट किया. वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर. Somebody will get in touch with you. Mahendra Patnakar, how long tariff impact could last? Please provide. Mahendra ji, देखिए impact on the present is very limited, which is how I started with. बहुत limited impact है. हमारा फ्यूचर खराब होता है. आप सोचो, if US, the biggest market in the world today, opens up for us and gives us preferential access, एक बराबर एक्सेस देगा तो कुछ नहीं होता है. प्रिफरेंशियल एक्सेस अगर मिलती है तो in many newer spaces जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, we can gain a scale which we have not dreamt of today. तो जो चीज चाइना में हुई, बेसिकली व्हाट दे एक्सपोर्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो उसका कुछ एक पार्ट हमारे यहाँ वाकई में हो सकता है. तो विच इज वाई वी सैलिवेट. अभी हमको मतलब जूते बना के और कपड़े बना के वहां बेचने में, दैट्स ऑल्सो बिजनेस, पर वो तो हम कर ही रहे हैं. उसका कितना स्केल हो सकता है, वो तो जो भी कल ज्यादा सस्ता करेगा उधर चला जाएगा. But in newer value-added spaces, which are labor-intensive also, which can absorb a lot of people, उसमें the longevity of growth can be really long. तो इसलिए we are looking at them. Immediate term impact नहीं है, बहुत कम है. मतलब in spaces like cotton textile, anything that is textile, carpet, textile, cloth, उसमें impact है. Shrimps में impact है. Diamond jewelry में theoretically impact है, otherwise नहीं है. डू यू नॉट टेक आईटी स्टॉक? सर देखो, कोई भी स्पेस जहां पे ग्रोथ इंडेक्स प्लस 3-4%, इंडेक्स की अगर 12% है, तो आप देखो मैक्स समझो. वी से वी आर इंडियाज ओनली ग्रोथ इन अर्निंग्स फोकस्ड मैनेजर. तो 12% इंडेक्स की ग्रोथ हो गई. 3 से 4% हमको एक्सेस रिटर्न बिल्ड करनी है. उसके ऊपर फीस 2% ऐड कर लो, तो 12, 4, 16, 2, 18. उसके बाद एरर्स ओमिशंस 1.5%, थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन बिल्ड करें, हमारा स्टार्ट पॉइंट बिकम्स 20%. तो अभी आप बताओ कौन सी आईटी कंपनी 20% कैगर ग्रोथ इन अर्निंग्स प्रोवाइड कर पाई? कोई लार्ज कैप नहीं कर पाएगी. तो हमारे यहाँ लार्ज कैप आईटी जीरो है. मिड कैप में कुछ नाम कर पाएंगे, तो आपको हमारे यहाँ वही नाम मिलेंगे. दैट इज हाउ यू लुक एट अस. अगर एक भी बैंक नहीं कर पाएगा, तो एक भी बैंक हमारे यहाँ प्राय नहीं मिलेगा. अगर कोई मिलेगा तो शायद एयू बैंक. दिस इज द मैनर ऑफ लुकिंग एट आवर पोर्टफोलियो, वेरी शार्पली डिफाइंड ऑन ग्रोथ. Which type of fund provides both growth and safety? So, Srinivas Raghavanji, we say growth is something which provides safety, but the journey would be volatile. ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको मतलब डेट की तरह से एक सरीका रिटर्न दे पाए. ऐसा कुछ नहीं होता इक्विटी मार्केट में. Most people, when they judge safety, they then think of index returns ki, over a period of time, it goes up, it makes you money.
If you want straight line kind of this thing, it is available only in bank fixed deposits. आप वहां जाएं. Even debt funds are volatile. ओके अगर आपको बेटर आउटकम्स चाहिए तो वी से ऑन योर $100 विद लेस वोलेटिलिटी वी से हैव अस ऑन द ग्रोथ साइड पेयर अस विद द बेस्ट ऑफ वैल्यू. तो दो तीन फंड में आपकी पोर्टफोलियो बन जाएगी और आपको मालूम है जब वैल्यू चल रही है मार्केट में वन पार्ट विल डू वेल, व्हेन ग्रोथ चल रही है यू शुड एक्सपेक्ट अस टू डू वेल. ओवरऑल यू विल कीप डूइंग better than the market is what my expectation is. अगर आपको volatility digest होती है, if you can digest volatility, then with the thought कि markets ultimately follow earnings growth, we would request you be with us. Rekha Ramji, somebody will get in touch with you. I showed you 2-3 funds where we thought we have a good this thing. We also showed you mid cap fund where a lot of you are there. So all of our funds are doing well. Yes, depending on your risk profile, you come into us. Uh, Somebody will get in touch with you. Samir Khan. Yeah, Tamir Khan, Active Momentum Fund is the most expensive fund in the industry. It is directly sold only. There is no distributor in between. And the returns you see are after cost. So, like I said, small size is an advantage. It is only directly sold. You please put us on track. We will keep sharing performance with you. If you like us, please do on board. Mm, 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 mm. Tanish Parashar, how can we know the valuation of a company whose IPO has just been started? Well, historic valuation तो मिल जाएगी, on history PE, but forward नहीं मिलेगी. And our whole thought is कि markets are more forward looking than backward. So there, I think you would be constrained. Do you take AI investors at the rate 10 lakhs in Chirag Pandya? I couldn't understand the question. In founder strategy, it is an alternate. If you come on the PMS, 50 lakh is the minimum amount. After putting in 50 lakhs, you can put in any amount later if you like the strategy. If you come into an AIF, minimum commitment amount is 1 crore, which you can put over a period of time. For period of time, my team can explain. Different funds have different constructs. Period of time में 10 lakhs into 10 is possible. Rajdeepak Pandey semiconductor segment we think is something which offers strong growth in our portfolios. You see all of our portfolios in the house, you will see some representation of EMS players, electronic manufacturing services players, where we think growth will continue for long. In fact, over 5 years, they've delivered very strong growth. Over the next 5 years, mostly growth will be stronger. So we continue to be positive. Soma Shankar, Venkadhari, I have 50 lakh. Somebody from my office will get in touch with you, Soma, to understand and then propose something. Manish Bhai, Raj, you are taking note. Manish Bhai, Yes, sir, we're taking notes. Patania, AI is going to impact investment industry. It is going to help us sift through various companies faster. It is going to help us, service our clients better. So these are the two things that we expect AI to do. Already Raj is working on deploying AI to, have better focus on our marketing and our interaction with yourselves. Vijay Kumar Talker. So Vijay Kumar Talker, I agree with you. One, don't look at what we are doing, look at what youngsters are doing. Youngsters are the future. What they are doing is typically where you would end up making more money. You know,
I kind of believe in it. If you are young and you like Coke and you see a lot of people drinking Coke, chances are Coke will do very well. At the same time, as you get older and you stop drinking Coke, your body won't sustain, and you don't see youngsters adopting it, then Coke का कोई ज़्यादा value बचता नहीं है. If you see a trend in youngsters, bet on it. Youngsters are the future. दूसरा जो है एक थॉट यंग आर फ्यूचर है सेकंड इज एज द per capita has increased premiumization is the future. We are a very aspirational country people. We want something better in life, so anything which is aspirational should be expected to do better. Accredited investors in AIF office will get in touch with you. Yes, if you are accredited investor and you have that certification, then lower amount should be possible. Saidi Pulwari, INR is stably weak currency. Yes, INR has been one of the weak currencies lately, but with all the negatives, it's not breached 88, stayed below. So, I am talking of day on day what I am seeing. If it stabilizes, and the reinforcement would be if you see reserves not dropping, which means RBI has not uh, tried to keep it stable, then you gain more faith in the level of the rupee. Now, level of the rupee is also contingent on what levels other countries are at. So today, if we get patched with bad duties, then the first line of defense is to weaken the currency, which is what you have seen. If you see outcomes of duties improve, you will see rupee also strengthen a bit. Uh, Friends, I think I have answered that question. Mm, Rejabul Haq, don't do levered investing, very risky. So, Shashank, but on the index, small and mid caps seem to be expensive. Okay, we share the same thought. But indexes hide the story. If you think growth, if you think we shared with you many spaces where growth is there. So अभी आप सोचो, hospitals में there is one name which is large cap, everything else is mid and small, right? If you think capital markets, there are no names which are large cap. The biggest mutual fund is a whisker below large cap, right? Everything is mid and small. All of them will grow faster than banks, for example, in a meaningful manner. Luxury में अगर आप सोचो तो I would believe even all hotels are mid or small. Titan may be one name which is large. All jewelers are otherwise mid and small. So if you look at GLP-1, everybody is mid and small. If you look at spaces where there is high growth, you will find most players being mid and small. Even in defense, there are two large caps, baki sab mid and small. So if I think you should focus on growth and sustenance of growth rather than mid and small, and then see if the valuations in growth spaces make sense for mid and small. समझे ना? So our sense is in many of the growth spaces, valuations in mid and small are defendable, which is how we have built the portfolios. Amit Gupta, we have actually got a Nasdaq fund and an S&P 500 fund, but today they are locked. We can't accept money. We are planning a fund through Gift City for again taking exposure to the offshore asset classes. When we do it, we will definitely be in touch with you. Yeah, Chirag Modi, you have seen it. So now you notice Nifty 550 momentum is the worst performing index. And yet our active momentum has done well. Better than Nifty, S&P 500. Better. We showed you how things have happened. And hence I am saying versus a passive momentum fund,
Momentum strategy, look at active momentum strategy. I think we have got a very good construct. Special Opportunities Fund is around 40 to 50 crores again. This is again directly sold. It's just a week into listing. While markets have been down, it is positive. Again, a small fund only directly sold. So Active Momentum also was just about 40 crores when we did the raise. Divya Prakash, look at some of our smaller funds of the regular distributed ones. Look at LMC. So I assume you are with mid cap. So look at Flexi, LMC, but the smaller ones are multi cap, innovation, business cycle kind of funds. I would think smaller a fund is better is the outcome. Sajjan Sharon, if you are in doubt, take a fund which invests across market caps. Then LMC is a good fund that does it across market cap. Or better, something like a business cycle, active momentum kind of fund you should take. I would urge everybody to have a look at our active momentum fund. SIPs are always better, Shetji. Which Motilal MF? We took the names. You could consider any. Uh, I would urge you guys, like I said again, look at if I am assuming all of you guys have come into us through Midcap. Midcap is our largest fund. Look at a fund which complements Midcap very well, like an LMC, like a active momentum fund. If I have to choose two of our funds, practically everything is doing well. If you are looking at a large cap fund, do look at our large cap fund. It is industry highest return provider fund, doing very, very consistently well. So silver, I am not an expert. Shubham can't answer. Sujay's Motilal Focused Fund is one fund which is still not doing well. I said when I was showcasing performance, we have had a fund manager change. We got a very experienced hand recently. He has taken over just from the beginning of this month. If you see the performance over last February till now, it had bounced back quite nicely, but overall it doesn't look good. We have still got a long way to cover. So give us some time here. I would say, when the time comes, we shall point it out to you. Shri Kumar, markets are slave of earnings. If you think earnings in Nifty will expand between 10 and 12%, that's the compounding you should build for next 5 years. Anurag Julka, which fund will you? Anurag Julka, somebody will get in touch with you for a 75 plus. Again, the outcomes can be different. If you think the money is for you, then you should not be for us. This is not an age to invest into equity. But suppose I have met people who are senior citizens. If suppose they want to invest for the next generation and so on, the risk taking ability can be very high because this is money that they don't need, they think they won't need, and then the outcomes of the conversation can be very different. So it's not only age, it is how much surplus you have and how much do you think you will use and how much do you think you will pass on. So if suppose I have met clients who say, I have so much of money for myself, I won't use it. तो हमारे बच्चों के लिए if it is for your kids, then a very aggressive portfolio can also do. If it is for yourself, then a very conservative portfolio needs to be done. Devendra Singh ji, we can't give numbers, but we hope to do very well. We have been doing very well, putting all efforts to continue to do well. Yes. So, Prinshu Kumarji, you have been tracking our infrastructure fund for all, touchwood, but today all of our recent fund launches have had good outcomes. We did active momentum fund, we did services fund, we did infrastructure fund, we did manufacturing fund.
I showed you all are looking good with substantial alphas over the index. Infrastructure fund, अगर आप देखोगे, so the construct is very different. When you think infrastructure, you think construction companies, we have nil. So, some bit of L&T may be there, but otherwise nil. We have hospitals kind of stuff in infrastructure, very, very differently constructed. In all of our funds, we try and put in a mind as to how we will generate alpha over a period of time. Okay, it is not run of the mill construct. First thing is how do we generate excess returns? We actually hold back an approval if we don't find a way of generating excess returns. It helps that this is a period wherein index has a lot of legacy businesses and something outside of the index can do just better. So we launch funds accordingly. Thank you for pointing this out. Manoj Agarwal, FPIs are not focused on levels, valuations, etc. They're focused on yields. When you see yields there fall, so आप US 10 year track कर लो, अगर आपको 4% के नीचे दिखता है, you expect them to come to India. हमारी रूपी स्टेबल होनी चाहिए. शंकर पाटिल फ्रॉम आई एम इन्वेस्टेड फॉर 5 years in multi cap expected return. Sir, our multi cap is very recent. It is doing very well. Just about completed a year. You should look at it. It's the strongest performer in the space. Thank you so much, Amit Gupta ji. Devendra Singh, is there any plan to increase expense ratio of the fund in coming days? No, there is no plan to increase anything or change anything. But in our business, what happens is if you pay X to the distributor, suppose today the book yield बोलते हैं उसको book yield is 60 paise. Now, if you pay distributor forward so that you keep more than 60 paise, automatically over time you will have to revise fees up and vice versa. It is not on account of planning, it is just how much are you sharing with distributors. You would over time, since we have done well, our growth has been good, we have been able to pull back a tad from distribution commission. So our direct plan may have seen a bip or two increase. So while our sizes have changed considerably, yet we have managed profitability. Anirudh, frankly, we don't know. It is in the realm of RBI. Shubham, the tips are always good. You will have sustained earnings. You should keep investing the earnings. So SIPs are very good. If you get a large dip in the market, current is one such instance. You should try lump sum as well. Pinshu Kumar, in terms of volatile market and equity orient, Pinshu Kumar, we hope to manage funds with a high good beta quotient. So when markets turn volatile, suppose we have a crack in the market, we can hold. We typically tend to do well in one period, but in the next period, if the weakness continues, we will catch up and do as worse, maybe more. The point is, our betas are good. Our betas are linked to earnings growth. So we hope that when the market stabilize and come back, we should be expected to come back in a stronger manner. So point to point, we say, if markets are up and they have stayed up for 2-3 months, outcomes for investors should be much better. Yeah, so growth is strong. We were fifth, we became fourth. Over the next year or so, we should become third largest economy. If Fed rates get reduced, it gives tailwind to growth style of investing. I made that point that Fed rate reduction should be accompanied with 10-year bond yield reduction, should be accompanied with FPI selling a tad lower here, which should be a good tailwind for us.
Rajiv Mittal ji, Trump doesn't have the power today to put duty on services. If it does, we will be in bad shape. Our weak this thing is services, but Trump doesn't have the power to do that. Uh, t- 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 Yes, Somnath Chatterjee, very good question. So yes, renewable growth, so transmission and cables would also grow. So like I said, we have renewables everywhere. We have transmission and cables everywhere. Cables, you will find one cable company in each one of our construct. Construct like founders may not have transmission names. They tend to be MNCs, but our other constructs have transmission names without fail. Uh, like I said, active momentum have three transmission names. दिव्या प्रकाश, अगर फ्यूचर में इंडिया के साथ किसी कंट्री के साथ वार होता है, क्या इसका असर मार्केट के ऊपर पड़ेगा? पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव नहीं. So if you see when India Pakistan were having a war, Pakistan markets were going up like a rocket. You should track Israeli market. When Israel Hamas had a war, Israel market which was doing nothing moved up sharply. Just keep following. Markets follow earnings growth. Wars are good for earnings. Of things which are standing and good. सो अगर आपके इन्वेस्टमेंट में बॉम्ब लग गया तो अलग बात है, बट अदरवाइज पीपल मेक मोर मनी ड्यूरिंग वॉर्स एंड हेंस मार्केट्स मूव अप टिपिकली ड्यूरिंग वॉर. अब रशिया को भी देख लो, आफ्टर द फॉल इट्स डन क्वाइट ओके. बट डोंट वरी, वी आर नॉट द फाइटिंग काइंड्स. हम लोग प्रेम में विश्वास रखते हैं. Ashish Bhardwaj, what about Sensex opening up or down? Ashish, I made a point, I'll repeat it, which is, a lot of bad news is in. Markets are down while earnings are up, interest rates are down. So all of that is spring, which is there. Now, yesterday was the end of the month Valan period. So I was advised by my dealer that, typically it's a weekday and today is Friday. So over last several Fridays, people would not take positions home. So you see weakness towards the end. Same thing happened today. I would be optimistic from next week onwards. Frankly, matlab, nobody talks such short term, but let me step out. I would be positive from next week. So as we go into next week, many of our constructs are 99 point something percent invested. Okay, actually, many of our constructs are 99 point over 5%, hardly any cash in the fund. So if you want manifestation of how we think, but of course, markets are markets. Dr. Om Raj Katojan is yes, sir, you are right. The expense ratio is high. We don't sell through distributors. This is the maximum that SEBI allows, which is where we want to keep it. The whole thought is performance. Thought is not to expand too much. It's not a fund which has large capacity. Just an upside number at current market volumes. At current market volumes, if the size of the fund reaches, let's say 1,000 crores, we'll probably stop it. Vimal Karunanidhi. I would say this is a good time to start investing. I just made that point in the earlier one. Arya, thank you so much. Samir Khan, very huge now. No, Samir Khan, we are very small on the mutual fund side. Acha, mid cap is 35,000 crore fund, and I showed you the performance. It's coming back very, very strongly. You can look at our mid cap fund. We are very proud of that fund. If you already have it, you can increase exposure there or pair with something which doesn't have too much overlap. So an active momentum LMC or a innovation fund can be a very good go-to. Nitish, you are right.
Sheikh Abdul Ghafoor, we spoke of few funds. We think those should have sustained outcomes. Shivam Jha, I think a good construct for you would be a FlexiCap construct. So you could look at our FlexiCap fund or a LMC or a multi-cap or a active momentum fund kind of constructs. So those should end up doing what you want over a period of time. Mid or small में अगर confusion है तो opt to be with active momentum. Because size is small, mid and small mein problem is to get out. Okay, this thing can get out and go into other spaces if momentum goes to some other space. Amandeep Singh and Aneja, there are no AI related companies in the public domain just now. We are positive on the space. We are tracking it. If there are names there, we shall try and include it in the portfolio. Devendra Singh, somebody from the office will get in touch. I spoke of a few funds. You should look at those. Services industry is very strong. So yes, if you're looking at our services fund, look at our infrastructure, manufacturing and services. Put three funds together, you get 41 names, and the high growth part of the portfolio is done is the beauty of it. Don't just look at one theme. It becomes narrow. Services is a broad enough one. Should continue to do well. Our constructs are super high on earnings. All of that is very good. But if you just pair services with manufacturing and infrastructure, you get which is what the economy is, X of agriculture. आपका पूरा diversified fund बन जाता है. Anirudh Natkar, both the funds are very good. You have mid-cap, you have chosen very well, So this is what I've been saying, innovation opportunities or active momentum, whichever one. Vanshu Kumar, I tried to tell that. If you want more details, somebody from the office will get in touch with you. Yes. Vikrant Court, Kirwar. Yeah, so Special Opportunities Fund basically looks at special opportunities which keep arising point to point. So, जैसे if there is a company and it breaks into two parts, typically the outcomes are better for investors. Similarly, if there is a merger of, so we have a hospital where two large hospitals have merged to create the largest bed capacity in the country. We think outcomes can be good as efficiencies are taken out and so on. So, this is a slightly different way of thinking, different complementary portfolio constructs. So we think outcomes should be good. It just listed, I think, 21st of August. And over the journey, it is, I think, 2% positive, while markets are not so good. It is 87, 88% invested. Now, it is also a small fund, 40 crores. So, it shall also try and invest monies into IPOs. So, IPOs are special situations, right? So the strategy that we will adopt here over and above all of these mergers, acquisitions, government policies, PLI, etc. All of them provide tailwinds to a particular space is also IPOs. So let's see, very early days, but we hope for the good outcomes here. Recycling is a great industry. We like it. Some of our construct have it. We don't have a large cap or a large mid cap in the country, so that's a constraint. But
one name is there in one name is there in 2 3 funds, so other funds don't have it. But yes, in our listed unlisted combo that I showed you for founders, there is a unlisted recycling name that is there. It's a space where we think growth will be there for longer. Yash Kedar. Yes, so but the stuff is not listed, so we can't invest there. But yes, India will have a play in AI. Sandeep Kundu. And thank you so much for the kind words. So I showed you a fund construct where we start with themes where we think growth will be higher for longer. Okay. Now where there are fewer names, okay, like defense, we have a passive fund. Where there are more, like manufacturing, we have an active fund. Services, we have an active fund. So we want to go theme by theme, and that is one thought that should enable you to build your own diversified fund very cheaply. So I gave an example of pairing manufacturing and services and infrastructure to some other question, and if it's 41 names, your high growth part of your portfolio is done. Infrastructure, manufacturing, and services, X of agriculture is what the economy is. And same way, you can further split it down and build your portfolios. Shivam Jha, somebody will get in touch with you. Yes, Abhijit, you are right. We say we do what we do best across the funds shall continue to stay focused, high conviction. We don't like to experiment with client monies. There are no 0.1, 0.2, 0.3% in our portfolio. We get in when we have conviction of a particular order. We want over 2% holdings. That may not be always possible, but meaningful holdings all across the house. So compare us with any other, you shall not find any others like us. Like us, X of IPOs, you will not find chillers. Focused high conviction is what we do. We try and put a number that the manager shall adhere to. And when you have a number, then every time a new name has to come in, something has to go out. So that brings in a element of competition. With competition, the outcomes get better. Sajjan, somebody will get in touch, but SIPs are always better. SIFF of MO, we have taken a board approval, but we haven't gone to SEBI. Thank you so much, Aman. Aman, add an active momentum. Shubham, I told you consistent fund, better is to buy an index fund. Somebody else asked that question just now. Away from the index is called risky, which we are, but if we take risk in with philosophy in mind, following the philosophy of high growth, outcomes should be good while journey could be volatile. That is what my message is. Yeah, so standard deviation is a risk parameter. Our fund construct should be expected to have higher standard deviations. But over time, just like we gave that example of NASDAQ, higher standard deviation, but better outcomes. Something similar should be expected out of us. Chandrasekhar Reddy, Shekhar Nandi, somebody will tell you that. Sandeep Kandu, did I miss your question? Chandrasekhar Nandi ji, I'm assuming, like I said, you come through mid-cap, you complement that with a active momentum or an innovation fund, for example, or an LMC. Tamitra Dog, would you share we typically don't share, but if you want, share your email with Raj. We could share most of these slides. Thank you so much.
Thank you, guys. I think I've run through all the questions. Thank you for your patience. Thank you so much. This is something we shall keep doing period after period after period, and hope that this community grows in strength. Thank you. Thank you so much. Have a great evening, great weekend. Bye.